Good morning, folks. Good morning. Hope everybody is doing well. उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे. Today we're gonna do a live, short, little, quickly market review because tomorrow is Friday और कल हमारे पास NFP है because my local time is set to New York local time, so that's why today I still don't have 4th August. It's been 2 hours. 2 घंटे के बाद 4th of August न्यू डे का ओपन होगा मार्केट में. Here is our dollar index chart, daily time frame. If you look into it, I've just annotated that it's a few pips shy from digging into that BC of April 2022. अगर मैं आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ तो यहाँ देखें, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फेयर वैल्यू गैप, दिस BC. मार्केट उस BC से शाय है, उसके अंदर डिग नहीं किया उसने. So I'm pretty confident that market is inside daily CB, sell side imbalance, buy side inefficiency. So आज NFP जब न्यूज़ जो है मार्केट प्लेस में हिट करेगी at 8:30 o'clock according to New York local time, तो so my eyes will jump into that little BC. I'll zoom into it. इस BC में बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी कि डॉलर इंडेक्स इसमें डिग इन कर सकता है. और द सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर मी इज़ दिस वन राइट देयर, मीन थ्रेशहोल्ड ऑफ दीज 2 कंसेक्टिव डाउन क्लोज कैंडल्स. ये जो 2 कंसेक्टिव डाउन क्लोज कैंडल्स हैं, ये लास्ट पॉइंट है मेरे लिए, मेरे पास, मेरी आइज़ में. मीन थ्रेशहोल्ड इसका किसी भी ऑर्डर ब्लॉक के 50% को मीन थ्रेशहोल्ड कहते हैं, किसी भी फेयर वैल्यू गैप के 50% को कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट कहते हैं, और किसी भी वीक के 50% को भी कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट कहते हैं. सो मैं ये थिंक कर रहा हूँ कि NFP डॉलर इंडेक्स को नीचे लेके आएगी और गोल्ड और बाकी फॉरेन करेंसीज, इट विल गोना बी और रिस्क ऑन सिनेरियो. रिस्क ऑन सिनेरियो जब होता है उसमें डॉलर सेल्स ऑफ होता है और बाकी फॉरेन करेंसीज और स्टफ लाइक दिस गोल्ड एंड ऑल अदर एसेट क्लासेस दे विल मूव अप. सो मेरे पास लास्ट पॉइंट डॉलर इंडेक्स के लिए ये है. आई एम लुकिंग एट दिस फॉर द bullishness, otherwise I'm expecting that it's gonna wrap off and dig into it. Pretty much I'm looking on dollar index for this perspective of NFP tonight. Here is our silver chart, 15-minute time frame. Gold chart, by the way, it's a gold chart. तो अगर आप गोल्ड के चार्ट पे आओगे तो ये सेल साइड जो है, मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी पर्च कर लिया कल 8:15 पे न्यूयॉर्क के टाइम में मार्केट ने. बट इफ़ यू गाइस पे अटेंशन दैट वी स्टिल हैव एशियन हाइज एंड bunch of buy side liquidity gathered. And I just stated कि NFP protocols, I'm sitting on hands and waiting for the algorithm to shake the bullshit gamblers, and after that first washout I will come in if I find any setup. So basically what I'm trying to say, I'm trying to suggest that you don't have to push any buttons. आपका बेसिक पर्पस आज NFP इतनी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है कि इट विल समटाइम रिप ऑफ इन अ 1 minute बोथ साइड्स, सेल साइड बाय साइड दोनों को क्लियर कर सकती है. इट्स दैट टाइप ऑफ इवेंट. इट्स कॉल्ड विप्सा, जिसमें ये सेल साइड और बाय साइड दोनों को अटैक कर सकती है. नो वन नोज. सो माई आइज आर जंपिंग ऑन टू दैट बाय साइड लिक्विडिटी के मार्केट जो है, मार्केट मेकर एल्गोरिदम बाय साइड लिक्विडिटी को अटैक करेंगे एंड देन द कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट 50%. किसी भी फेयर वैल्यू गैप, चाहे वो BC हो चाहे वो CB हो, उसके 50% को कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट कहते हैं. एज यू गाइज नो दैट आई जस्ट स्टेटेड इन बिटवीन दैम दिस इज कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट 50%. So pretty much I'm looking on all of this price action like a trend line, but but my eyes are looking constantly if we have a little bit of fair value gap as well. Yes, it can happen. अगर ये इस फेयर वैल्यू गैप में आ जाता है तो लोग इसको इस तरह एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, इट्स मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड इट्स गोइंग डाउन. नो 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 नो, बिकॉज लॉट ऑफ बाय साइड इज रेस्टिंग अबव द मार्केट प्लेस. It is
टोटली परमिजिबल कि ये इस BC में आए M30 M15 के और then rips higher attacking what sell side. So for gold I'm expecting like buy side then sell side. I'm looking at this point of view. And here is your silver chart, 15-minute time frame. This low, high, lower low. What is this? It's a breaker block. क्या इसमें कितनी कॉन्जेक्टिव कैंडल्स थी? एक, बिकॉज इसके इन बिटवीन एक बुलिश कैंडल आ चुकी है, एक डाउन क्लोज कैंडल है, तो मैंने उसी को हाईलाइट करके एक्सटेंड किया है. एज यू गाइस कैन सी दिस इज M30 ब्रेकर, प्रॉबेबली M30 टाइम फ्रेम, या M13 M15 दोनों का ये ब्रेकर ब्लॉक है. Because we took buy side out and then rips lower, then watch out. What a perfect thing is that. Thursday 3rd of August 2023 9:30 पे न्यूयॉर्क के जोन के अंदर हमने इसमें डिग इन किया एंड देन रिपिंग लोअर. नाउ वॉच दिस. किसी भी वीक का मैंने बोला है 50% जो होता है वो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट कहलाता है. हम उस वीक के 50% जो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है इससे अबव बॉडीज़ की क्लोजिंग नहीं देखना चाहते. वॉच, क्या बॉडीज़ यहाँ पे इसके 50% से ऊपर क्लोज हुई हैं? नो. सो प्रीटी मच फॉर सिल्वर आई एम लुकिंग ऑन सेल साइड. माई आइज आर लुकिंग ऑन दैट सेल साइड. गन टू माई हेड, बिकॉज NFP है, anything can happen, but I'm looking on this sell side liquidity very pretty like a clear indication. तो 100% तो किसी को भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसी वाइब आ रही है अकॉर्डिंग टू माई हाइंडसाइट, अकॉर्डिंग टू द क्रेडिट टू माई मेंटोर इनर सर्कल ट्रेडर ICT माइकल जोहर्सन, जिसकी वजह से मैं आज इस जगह पे खड़ा हूँ कि मैं आप लोगों के सामने मार्केट्स रिव्यूज़ जनरेट कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने लाइव आके हर चीज़ को बिफोर एंड कॉल कर रहा होता हूँ. सो ह्यूज शाउट आउट टू माई मेंटोर इनर सर्कल ट्रेडर. सो मुझे ये सेल साइड लिक्विडिटी जो है बड़ी स्मूथ लग रही है. इट्स लुकिंग वेरी प्रीटी मच लाइक अ NFP विल हिट द मार्केट प्लेस एंड इट विल हैपन. जैसे कि आप गर्म छुरी को बटर में रख दो तो उस तरह वो स्मूथली अंदर घुस जाती है ना उस बटर के. आई एम लुकिंग ऑन दिस इंस्टेंस लाइक दैट. एंड हियर इज़ योर डॉलर इंडेक्स चार्ट. सो इफ़ यू लुक ऑन टू योर 30-minute टाइम फ्रेम, here what we have that gap. You guys are paying attention? देखें, जहाँ पे भी इस तरह बॉडी से बॉडी के दरमियान गैप आ जाएगा, इन दोनों की बॉडीज़ कैंडल्स की ओवरलैप नहीं कर रही, जैसा कि ये इन दोनों की भी ओवरलैप नहीं कर रही बॉडीज़. आपको जब भी ये इंस्टेंस सेगमेंट जो है प्राइस सेक्शन में मिलेगा, इट इज़ कॉल्ड एज वॉल्यूम इम्बैलेंस. इन फ्यूचर टाइम आपने इसको एक्सटेंड कर देना. फ्यूचर में मार्केट इसके अंदर डिग इन करती है लाजमी, चाहे आज करे चाहे कल करे, इट विल हैपन बिकॉज एल्गोरिदम विल गोना सीक इनटू दैट इनएफिशिएंसी. ये एक गैप है जिसको एल्गोरिदम फिल करता है, और देखें कितना परफेक्टली मार्केट ने एल्गोरिदम ने इसको फिल किया. लेट्स एज्यूम फॉर अ मोमेंट दिस इज़ द गैप, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट 2 कैंडल्स एंड मार्केट परफेक्टली डिग इन टू इट एंड देन रिप्स लोअर. और एक और एक्सट्रीम बियरिशनेस का साइन याद रहे कि ये डेली का CB है, सेल साइड इम्बैलेंस एंड बाय साइड इनएफिशिएंसी. लेट्स मूव इनटू डेली टाइम फ्रेम. दैट इज़ द थिंग व्हिच आई गोना शो यू समथिंग राइट देयर. ये डेली का CB है. जब मार्केट होती है एक्सट्रीम बियरिश तो हमें CB हो कोई भी हायर टाइम फ्रेम का, उसके लो पे आफ्टर लीविंग दैट market will come back and touch the low of that CB and then rips lower. It is, folks, it's perfect. It is this indication that dollar index is extremely bearish. Yes, we have little bit of fair value gap, BC हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, but if you watch closely it move up down. What is this? I'm looking on this fair value gap as a बैलेंस्ड प्राइस रेंज, एज ए ब्रेक अवे गैप, क्योंकि मार्केट ने अप एंड डाउन की मूवमेंट दी और फिर इसको लीव किया है. आफ्टर मूविंग अप डाउन व्हेन मार्केट ब्लॉक्स लोअर विद मोमेंटम एंड लीव्स दैट, इसको लीव किया उसने और देन कम्स बैक. सो वी विल एंटिसिपेट दैट इट्स अ ब्रेक अवे गैप. सो वॉच दिस and think like market makers perspective. This is a sign of extreme bearishness to me, and it is indicating that we're gonna dig lower. And here we have daily CB
BC, buy side imbalance, sell side inefficiency. Probably chances are if we do not hold that, then we'll probably attack these relative sell side liquidities और then इस BC में आ जाएंगे हम. Here's your daily time frame. I'm talking about that BC, the mean threshold. Otherwise, the probabilities are that clear higher time frame inefficiency. So आप लोगों को कोई मजबूर नहीं कर रहा कि आप लोग बटन्स को प्रेस करो. Whenever you're gonna lose money, it's always gonna be you. It's your fault. Remember, we are in August. August is so much manipulative month. ICT हमारे जो मेंटोर हैं माइकल, उन्होंने खुद बोला है कि अगस्त का जो मंथ होता है वो बड़ा अनप्रडिक्टेबल सा होता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें आपको परसीन नहीं मिलती. परसीन के एलिमेंट्स होते हैं लेकिन थोड़े से ना ऑफ होते हैं, मडी होते हैं. मतलब प्रॉपर मूवमेंट्स ज़्यादा नहीं होती. लाइक कि 200 पिप्स 300 पिप्स इस तरह की मूवमेंट आपको डेली में, वीकली में बहुत कम मिलती हैं. तो अगर आप लोग देखेंगे तो दिस इज़ माय मंथली ओपन के बाद मार्केट नीचे मूव करी जा रही है, उससे बिलो है. वीकली ओपन ये लगा हुआ है मेरा, स्टिल इससे भी बिलो है मार्केट. सो फॉर मी सेल साइड लिक्विडिटीज़ ने ऑलरेडी पर्च करी हुई है, लेकिन देयर इज़ अ स्मॉल फेयर वैल्यू गैप. आई एम लुकिंग ऑन बाय साइड प्रोबेबली, क्योंकि हम बहुत ही डीप डिस्काउंट में हैं. और इस बाय साइड को अटैक करके इस फेयर वैल्यू गैप को, मार्केट M15 पे जो फेयर वैल्यू गैप है, इसको कैसे यूटिलाइज़ करेगी. मीन थ्रेश होल्ड से अगर तो अबव बॉडीज़ क्लोज हो गई प्रॉपरली, तो देन माई आइज विल जंप इन टू दैट. दैट्स द लास्ट पॉइंट. अदरवाइज वी गोना एंटिसिपेट दैट इट इज़ बुलिश टोटली. बिकॉज अगर आप देखोगे तो पिछले 2 दिन से हम लोग सिर्फ कंसोलिडेशन ही कर रहे हैं. येस, देर वर सम मूव्स इन न्यूयॉर्क एंड इन लंडन सेशन, बट वो बड़ी चोपी मूव्स थी. न्यूयॉर्क में भी कोई प्रॉपर मूवमेंट थी नहीं जिसमें आप प्रॉपरली एंटिसिपेट करके कुछ अच्छा देखिए. फॉर बिकमिंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर यू नीड कुकी कटर. आप लोगों को वो मॉडल चाहिए, योर यूनिक मॉडल. आप लोगों को मैं जिसे कहते हैं एक मॉडल डिज़ाइन करके नहीं दे सकता. उसकी रीज़न ये है, फिर आप लोग सब उसी चीज़ पे स्टक हो जाएंगे. हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोग, द पर्सन, देयर आर लॉट ऑफ पर्सन्स गोना लिसन टू दिस market review and they're gonna think, yeah, this boy is talking about order blocks, so I have to utilize that. This boy is talking about volume imbalance, so I have to utilize that. Man and lady, that's great, but remember, इस तरह आप लोग लकीर के फ़कीर बन जाओगे. मैं चाहता हूँ आप लोगों को इंडिपेंडेंट देखना, आप लोग मुझ पे इंसान करना है. आई डोंट वांट टू रिलाई ऑन I don't want to rely on anybody else. So that's the same anticipation and expectation which I have for all of you. That you even don't have to rely on me. You don't even have to look back on me and say, where should I buy? Where should I sell? I'm gonna show you exactly how you can do this, and you don't need to sign up for anybody's service, nobody's mentorship, not even mine. You won't even have to come to my YouTube channel after next year. You won't even have to come to. I promise you, in next 8 to 9 months, you gonna become monster in trading if you really pay attention to these things which I am talking about here. So here's NFP protocols. Once again, I'm highlighting it to you. तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियोस में. तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और इस तरह के मार्केट रिव्यूज़ और डिटेल डीप इनसाइट जो मार्केट्स की है आपको हमारे चैनल पे मिलेगी. आप सुन रहे हैं माइकल के रियल स्टूडेंट एहतशाम रज़ा को. अगली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़. बी सेफ.